हेलो स्टूडेंट्स। वेल लेट्स लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। ओके, हम लोग आज जो है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी सी वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम लोग अपने आसपास जो है बहुत तरह के पौधों को देखते हैं। नाउ सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स जो हैं वो बड़े हैं और कुछ प्लांट्स जो हैं वो छोटे होते हैं, राइट? Some have big leaves while the leaves of other plants are small. कुछ के बड़े पत्तियां होती हैं और कुछ पत्तियां जो है दूसरे प्लांट्स की वो छोटी होती हैं। Each plant is unique. हर एक प्लांट जो है वो बिल्कुल अलग है, अपने आप में अलग यूनिक है वो बिल्कुल। For example, a rose plant looks very different from a jasmine plant. गुलाब का पौधा जो है वो जैस्मिन, जिसे कि चमेली कहते हैं, उसके पौधे से बहुत अलग दिखता है। अ banyan tree is quite different from a mango tree. बरगद का पेड़ जो है वो आम के पेड़ से बहुत डिफरेंट होता है। Though they look different, all plants have some common parts which perform the same functions. अब यद्यपि ये सारे पेड़ अलग अलग दिखते हैं, लेकिन प्लांट्स के कुछ कॉमन पार्ट्स होते हैं जो कि सेम काम करते हैं। तो पौधा कोई भी हो, ये कॉमन पार्ट जो होंगे उनका काम बिल्कुल एक ही जैसा होगा। तो हम इन्हीं पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ ऑब्जर्व ए प्लांट केयरफुली। अब किसी भी प्लांट को ध्यान से देखिए। द पार्ट ऑफ द प्लांट यू सी अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट या फिर स्टेम। प्लांट का वो हिस्सा जो कि जमीन से ऊपर आप देखते हैं, ये शूट कहलाता है या फिर स्टेम कहलाता है। द शूट ऑफ अ प्लांट bears द branches, leaves, flowers and fruits. तो शूट जो होता है, इसके फिर अलग इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जो है स्टेम, स्टेम से लगे हुए ये ब्रांचेस या टहनियाँ, उसमें लगे हुए ये लीव्स या पत्तियाँ, फ्लावर्स और फ्रूट्स, ये सब शूट के साथ जुड़े होते हैं या शूट का हिस्सा होते हैं। द रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। जमीन के नीचे क्या ग्रो करता है, तो रूट ग्रो करता है, राइट? सो यू कैन सी हियर this whole part is the shoot and this one here is the root, right? Right. So now let's talk about the roots of the plant. Now roots of a plant grow below the soil. पौधों के रूट्स जो होते हैं वो जमीन के नीचे ग्रो करते हैं। नाउ रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। जो रूट्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो दो तरह के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। टैप रूट्स क्या है, तो इन सम प्लांट्स वन मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम इनटू द सॉइल। कुछ पौधों में एक मेन रूट जो होता है वो स्टेम के अंत से शुरू होता है और जमीन की तरफ ये ग्रो करता है। नाउ दिस मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। तो ये जो मेन वाला रूट जो नीचे जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। नाउ सेवरल स्मॉल रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस मेन रूट। कई छोटे छोटे रूट्स जो है वो इस मेन रूट से ग्रो करते हैं, लेकिन एक ये मेन रूट रहता है, राइट? टैप रूट। Now beans and mustard plants are examples of plants that have tap roots. तो बीन या मस्टर्ड के जो प्लांट्स हैं, ये उन प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनके टैप रूट्स होते हैं। Another is fibrous roots. Now some plants have numerous roots growing from the base of the stem. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके कई सारे रूट्स होते हैं जो कि स्टेम के बेस से जो है ग्रो करते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। तो ऐसे वाले रूट को क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रास एंड अनियन प्लांट्स, राइट? ग्रास या घास जो हुआ और अनियन का जो पौधा हुआ, इनमें आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट देयर फंक्शंस नाउ। रूट्स का काम क्या होता है? Roots help fix the plant firmly in the soil.
रूट जो है वो प्लांट को मजबूती से जमीन में टिकाए रखने में मदद करता है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। रूट जो है वो सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए। Roots of some plants such as carrot, beetroot, turnip and radish store food. तो कुछ प्लांट्स जैसे कि कैरेट, बीटरूट, टर्निप और रेडिश जो हो गए, इनके रूट्स जो है वो फूड स्टोर करके रखते हैं। These are called edible roots. तो ये जो रूट्स हैं इन्हें एडिबल रूट्स कहते हैं, यानी कि ऐसे रूट्स जिन्हें कि हम खा सकते हैं। Alright, now let's watch this animation on roots. Structure and function of roots. When we look at most plants around us, we see the parts of the plants that grow above the soil. Do plants have other parts as well? Plants are able to stand tall and firm because of this part of plant called the roots, which mostly remain under the ground. There are two main types of roots seen in plants. Some plants have tap roots, while some have fibrous roots. Carrot plant is bean and beet. There are two main types of roots seen in plants. Some plants have tap roots, while some have fibrous roots. Carrot plant is an example of a taproot. A taproot forms when one main root grows from the base of the stem and many other smaller roots grow from this main root. This main root keeps growing downwards and goes deeper into the soil. Other plants that have taproots are bean and beetroot. The fibrous roots are seen in plants like grass. In this type of root system, numerous roots of the same size grow from the base of the stem. These roots grow sideways in a bunch and do not go very deep into the soil. Some plants that have fibrous roots are onion and wheat. Roots are a very important part for plants. Look at this boy trying to pull out a bunch of grass from the soil. He tries to pull the grass, but the plants do not come out easily, and the boy ends up lifting the pot. This shows that roots of the grass plants are holding them firmly in the soil. Thus, the roots function to prevent the plants from being uprooted by fast wind and flowing water. Now look at this boy digging holes in the soil. While making the holes, the boy removed the roots of some grass plants. After a few days, he noticed that the plants whose roots were removed dried up and died.
Can you think of the reason why the plants died? Roots absorb water and minerals for the plant from the soil. In the absence of roots, the plants could not get water and died. Roots of many plants such as carrot, beetroot and radish also help to store the extra food made by a plant. Now we all know how important is the roots to the plant. So well, students, now let's answer these questions. Dash is an example of taproot. Beetroot seems to be the right answer. Roots of this tree can grow above the ground as well. इस पेड़ के रूट जो है वो जमीन के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं. Mangrove tree. Let's check the answers now. We got both correct. तो वेल स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रूट के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया. अब अगले लेसन में हम लोग प्लांट के दूसरे हिस्से के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि स्टेम के बारे में. तो मिलते हैं अगले लेसन में. बाय बाय.